And that particular study center is called as Ambedkar Phule Pathshala. So where kids come and they participate and study, and there is some guidance which is happening around that particular, for the kids. So now I would like to invite uh, Ms. Julie Naik to come forward and unmute yourself, and you can, uh, if you have a presentation, let us know. We can make you co-host, and then you can share the screen for us. Hello, Yes, we can hear you, Julie. is it audible? Yes, we Yeah, can hear you. Jai Namabuddhaya. Actually, I'm facing some internet issues, sir. So, yeah, it's not audible there. Do you have some screens to share, or you have, Hello. um, yeah, do you have any presentation to be shared? I can do that for you. You can send me the presentation, and then I can share it. I have made Yeah, her I have a co-host, so she can presentation, sir. definitely share the screen now. If possible, like make a co-host, then I will You are a represent. Yes, co-host. you are co-host now. Okay, thank you so much, sir. Just a minute, let me see. Yes, sure, sure. Is it visible, sir? Yes, we can see the screen. Thank you. Please go ahead. Okay, okay. Thank you so much, sir. Yeah. So one more, sir. There's a doubt actually. Yes, go ahead. Yeah. So I will try to like speak whatever the journey we had, and it's my first time to speaking in such environment. Like I have never spoke before, Sure, like in sure. English, so it may be a bit difficult for me to deliver my idea. So I will try to like uh, maintain the both the decorum of Hindi and English, and please allow me to do so because it's a bit Please, please, like uh, yeah. please, Okay, please do so not, yeah, uh, please do not hesitate. You can continue. yeah. If there is something that needs to be summarized, we can summarize. Or if you need to kind of Okay, sir. jump on to Hindi for some time, that is also fine. Yeah, okay. Okay. So firstly, like yeah, yeah. Thank you so much, sir. Uh, I want to like convey my gratitude for Anna. Like it's been couple of weeks only. I met with Mahesh sir through online itself, and I like encounter with Ambedkar Association of North America. It's completely new for me, so it's a really it's a privilege for me to represent our journey in this platform. And I would like to start this journey with a golden quotation of Dr. B.R. Ambedkar. He used to say, like, men are mortal, so are ideas, and ideas need propagation as much as a plant need watering. Otherwise, both will wither and die. Like, why Anna is like such kind of a platform are most like we have to cultivate our ideas, and for that we need a platform to cultivate our history, to cultivate the ideas. And like I really want to say thanks to Anna and those who are joining here, because like it's like the our mission, and like it's a like honor to represent our journey there, because it's very much like essential to
share all those things, because like we hardly get such kind of environment where we can speak about our struggle. So again, I want to say thanks on behalf of Ambedkar Phule Pathshala to everyone, those who are joining today, and I would like to start my presentation and all. So as you can see in there, like I'm going to speak a bit about Ambedkar Phule Pathshala and its journey. So you can read the headline there, right? Ambedkar Phule Pathshala, an educational pilgrimage for marginalized students. So this journey has been started in 2019, as Mahendra sir explained. So Ambedkar Phule Pathshala is in established in 2019 in Odisha. There is a district known as Kalahandi, and it is a very, like, you can't find in map as well. Like, it's a very tiny, and it is not that much, like, progressive and all. So Kalahandi is known for starvation and, like, hunger time. So in this area, like, it is very, like, very difficult to take such initiatives, because, like, being a first generation learner, it was also very difficult for me to think such idea, to cultivate such idea. So I will share a bit journey about this. So in 2019, like, I was in 12th by that time, and I was very young to understand the socio-political scenario and the caste genesis and all, but it doesn't mean that I was not a victim of caste system. And so that's why only, like, the ideas began from that. Like, when I was in 10th class, and like, for the first time I got to know about Dr. B.R. Ambedkar, and it is like very surprising, because I was studying in a SC ST developed area, and I was unaware about this and I was unaware about with the incident in Bamula institutional murder, and that particular issue turned me into 360 degree. So later, like, I talked with many people, those who were there nearby, my friend circle, and I started asking the question, because as I mentioned, I was very young enough to understand uh, such things like the genesis of caste system and the socio-political scenario. So later they advised me to join Nagaloka. Again, it is a huge platform for marginalized students, which is in Nagpur, Nagarjuna Training Institution, and I went there to learn a bit about our history, uh, to learn a bit about anti-caste philosophy and all. So I went there, and like, I tried to learn all those things, and uh, the the environment, what I, like, felt there is very much different. Like, अगर हम ओडिशा की बात देखें, तो it's very different. Like, there is no such proper, educational institution like the community study center and all. तो वहां से आने के बाद महाराष्ट्र का एक बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट मेरे ऊपर पड़ा. So I started talking with different socio political organization to work towards the educational mobility. And देयर आर सच, लाइक, इन उड़ीसा में भी बहुत सारे छोटे मोटे Like इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. हेलो. Yes, go ahead. Sorry. I think somebody got unmuted. Sorry. Go ahead, please. We're listening. या तो उड़ीसा में भी देयर आर कुछ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, दोज आर वर्किंग फॉर, लाइक द सोशल इश्यूज एंड ऑल. लेकिन एजुकेशन को लेके देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशंस. और एज आई मेंशन, वी वर वेरी यंग, सो आई वेंट टू वेरियस socio-political organization and started talking about this educational model. Like, if you want to actual development, actual transformation of the society, then we have to work for the educational upliftment. But there were no one to welcome these ideas, because all are busy with the socio-political issues. And some ideas with there are also, like, जो पाठशाला के को फाउंडर है दुष्मंत एंड लोचन मंगराज, एंड
मैंने उनके साथ ये जो आइडियाज था उनको शेयर किया, क्योंकि वो मेरे एज ग्रुप के थे और मुझे लगा कि दे कैन अंडरस्टैंड राइट वट एवर आइडिया आई हैव। तो जब मैंने उनको शेयर किया 2019 में, सो उन्होंने जो आइडियाज था उसके ऊपर में काम करने के लिए बोला। मतलब अ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने जब बातचीत की, उसके बावजूद तीन लोग, दुष्मंत, लोचन और मैंने 2019 में एजुकेशन जो एनवायरनमेंट है हमारे सोसाइटी में उसके ऊपर बातचीत की। और आपको कुछ डाटा के बेसिस पे बता दूं, जो उड़ीसा का जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, एज आई मेंशन, इट इज नोन फॉर स्टारवेशन। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी रिसेंट एक रिसर्च हुआ मेरे, जहाँ पे अंबेडकर फुले पाठशाला है, उस इलाके पे कि कितने बच्चे 10th मैट्रिक जो एग्जाम है उसमें अपियर हुए हैं। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग 10th के एग्जाम नहीं दिए बिकॉज दे आर माइग्रेंट लेबर। और वो जो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स थे वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ही थे। तो ये सब जब डाटा हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ड्रॉप आउट जो रेट है गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, तो वो बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें अदर पार्ट ऑफ इंडिया से। तो ऐसे सिनेरियो यहाँ पे है। तो वो सारी चीजों को स्टडी करने के बाद हमें लगा कि वी हैव टू डू समथिंग, बिकॉज एज अ स्टूडेंट वी डोंट हैव दैट मच वेल्थ टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी। we have time and we have talent, so we can use that in a proper way। फिर हमारा आइडियाज एमर्ज हुआ अंबेडकर फुले पाठशाला का, जब हमने थोड़ा बहुत सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया। तो लोचन में और दुष्मंत 2019 में अंबेडकर फुले पाठशाला का जर्नी शुरू किया। लेकिन उस टाइम पे ये एक छोटा सा कोचिंग सेंटर बस था जहाँ पे बच्चे आते थे, दो दो टाइम पढ़ के फिर जाते थे अपने घर। तो आपको सबको पता होगा कि कोविड के टाइम में अगर किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को, बिकॉज जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वो सारे ऑनलाइन बेसिस पे चल रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन था। और हमारे जो बच्चे थे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो बच्चे थे उनके पास कीपैड फोन भी नहीं था वो एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। सो कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स 2 साल तक मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सफर किए हैं। देवर लाइक वो अपने एजुकेशन से डिस्टेंस में थे। तो हम लोगों को लगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सफर कर रहे हैं कोविड की वजह से। फिर हमने वेरियस लोकेशन पे जाना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देन लेटर लाइक कोविड के दौरान ही हम लोग जब बैठ के बात कर रहे थे कि ये सोल्यूशन नहीं है, राइट, क्योंकि जब हम सोसाइटी के अंदर गए तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स निकल के सामने आया। जैसे कि बहुत सारे जो भी हमारे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग डेली वेज लेबर्स हैं। तो वो उनके पेरेंट्स काम करने जाते हैं तो उनको अपने घर का काम काज देखना पड़ता है। अदरवाइज उनके पेरेंट्स के साथ वो लोग जो स्टूडेंट्स है वो उनके उनके पेरेंट्स के हेल्पिंग हैंड्स है। तो कहीं ना कहीं हम जिस एजुकेशनली लोगों को जो अवेयर करने के लिए सोच रहे थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर हम लोगों ने बैठ के सोचा कि हमें एक सेटअप चलानी चाहिए जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। फिर लोचन दुष्मंत के साथ मैंने बात किया और मेरे घर से जो पाठशाला का जो लोकेशन है, सूरेछड़ा गोला मुंडा करके एक ब्लॉक है, वो मेरे घर से 1 ही किलोमीटर अवे है। और हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा सेटअप नहीं था, तो हम लोग बस एक छोटा सा लोचन का एक छोटा सा घर था, रेसिडेंस था, जो कि इंदिरा आवास जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसी घर के अंदर हमने एक सेटअप चलाया जहाँ पे बच्चे आते थे और पढ़ के जाते थे। लेकिन उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों में देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि 24/7 द स्टूडेंट्स वर एंगेज्ड विद देयर पेरेंट्स विद दैट सेम एनवायरनमेंट। तो फिर वहां पे आके हमको लगा कि हमें थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट, लाइक हमें थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको एक मॉडल दे सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के पीछे हम जिंदगी भर नहीं भाग सकते। और हमें लगा कि स्टूडेंट्स जो है वो लोग प्राइवेट स्कूल, इंडियन अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें हम, तो ये एक मल्टी लेयर पिरामिड काइंड ऑफ सिस्टम है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, इफ यू आर वेल एनफ, इफ यू आर एलीट, देन ओनली यू कैन एक्सेस द वर्टेक्स पोजीशन ऑफ दैट पिरामिड। और आपके पास अगर वेल्थ नहीं है, आप अगर सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, तो जो सो कॉल्ड प्रिविलेज स्कूल है वहां पे आप एनरोल नहीं कर सकते आपको आपके बच्चों को। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों के पास वो सेंस है, वो अवेयरनेस अभी लोगों में फैल रहा है कि
उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन ड्यू टू दैट certain social circumstances they were unable to send their children at that school. तो हमें लगा कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सेंड नहीं कर सकते, हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल अगर आप देखें तो वो एक हब है मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के लिए, एससी स्टूडेंट्स के लिए वो एक हब है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है हमारे आसपास में, आप अगर एक छोटा सा रिसर्च भी करें तो आपको पता चल जाएगा कि बस एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जाके वहां पे पढ़ते हैं। दैट इज वाई द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट गवर्नमेंट स्कूल इज वेरी पुअर। जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो 2 टाइम का खाना वहां पे एक टाइम का खाना वहां पे मिल जाता है। फिर हमारे दिमाग में आया कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और वेरेज एजुकेशनली उतना अवेयर नहीं है, तो हमारे पास कुछ आइडियाज सामने आए, जैसे कि नवोदय एंट्रांस एग्जाम्स का जो नवोदय रेसिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल है, ओडिशा आदर्श विद्यालय है और सैनिक स्कूल है। अगर उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं तो वो 12th तक वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे रेसिडेंस बोर्डिंग और फूडिंग का कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, और वो एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन वहीं पे जाके गेन कर सकते हैं। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब डोर टू डोर विजिट किया, क्योंकि एज आई मेंशन लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है ये सारे स्कूल्स को लेके। जो गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक एंट्रांस पैटर्न बहुत जरूरी है। तो हमने गांव गांव विजिट किया, लोगों को समझाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए। देयर आर सर्टेन स्कूल और एजुकेना है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमने किया और लोगों को समझाने का कोशिश किया। आप you can see the photos while like the field visit and all. या सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बाद में हमारे पास आया, हमने बच्चों को लाया, रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि हमारे पास एज आई मेंशन स्टूडेंट्स जिस बैकग्राउंड से आते हैं दे आर अनेबल टू राइट देयर नेम इन आवर वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो ये बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए था, क्योंकि दे आर गोइंग टू क्रैक द एंट्रांस एग्जाम विच इज नॉट देयर कप ऑफ टी। लाइक वो अपने लैंग्वेज में खुद का नाम लिखने के लिए वो लोग एबल नहीं हो रहे, तो उनको कैसे हम लोग एंट्रांस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने आया, क्योंकि वी नीड लाइक रेसिडेंशियल समथिंग काइंड ऑफ लाइक मॉडल, बिकॉज स्टूडेंट्स को 2 घंटे की पढ़ाई देना उतना एनफ नहीं है। फिर हमने रेसिडेंस के बारे में सोचा, बट बाय दैट टाइम वी हैड नो रिसोर्सेस, वी वर students only. Like I had just completed my 12th, and Loch and Dusmanta as well, they had just completed their graduation. So बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए कि चीजों को फिगर आउट करना, कि चलो हम हमारे पास कुछ डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टू पेवेट द सोसाइटी, बट हाउ टू वर्क ऑन इट, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। हम टाइम दे सकते हैं, हमारा टैलेंट यूज कर सकते हैं, बट देर आर नो रिसोर्सेस। जो फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो हमारे पास नहीं था उस टाइम पे। लेकिन समहाउ उस टाइम पे हम लोगों को कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट मिला था, स्टाइपेंड। तो हमने सोचा कि इसको यूज करके देखते हैं, और हमारे सोसाइटीज में जितने लाइक माइंडेड पीपल हैं उनको उनको रीच आउट करते हैं, ताकि वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और हम इस सेटअप को आगे लेके जा सके। तब तक हमारे दिमाग में कुछ नहीं था, हमें पता नहीं था कि अम्बेडकर फुले पाठशाला का फ्यूचर क्या है, कहाँ तक हम ग्रो करेंगे। बट फॉर दैट टाइम बीइंग ओनली वी वर वरिंग, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना था और हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो हमारा जो छोटा मोटा स्टाइपेंड का अमाउंट था हमने वहां पे इन्वेस्ट किया और पाठशाला स्टार्ट हुआ। तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास रिसोर्सेस खत्म होना शुरू हुए, हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं बचा, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल थे और 20 स्टूडेंट्स जो थे वो लोग ऑफ डाउन करते थे, यानी टोटल 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोचन भैया का घर था, उनके घर के अंदर वो सेटअप चलाना मुश्किल था, क्योंकि वो वेल फर्निश नहीं था, ना ही छत था उसके ऊपर, एक ओपन स्पेस था जिसमें बच्चों को लेके हम पढ़ा रहे थे। तो आउट ऑफ इमोशंस ओनली वी स्टार्टेड दैट जर्नी, बट लेटर वी रियलाइज लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेस। आप अगर बच्चों को रख रहे हैं तो आपके पास अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वी आर अनेबल टू अरेंज ट्वाइस फूड इन अ डे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी, और हमें लगा
लगा कि हम लोग ने इमोशंस के वजह से, आउट ऑफ इमोशंस वी स्टार्टेड दिस जर्नी, वी हैव टू स्टॉप। और बाय द टाइम 3-4 महीना बीत चुके हुए, तो बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत किया था। और उस टाइम पे जो 40 स्टूडेंट्स है, वो ओडिशा का जो आदर्श मॉडल स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको उन्होंने दिया था। फिर हमने वो सेटअप स्टॉप कर दिया 2019 में, क्योंकि हमें लगा कि हम रन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है। फिर हमने स्टॉप किया इंस्टीट्यूशंस को। और यू ओंट बिलीव, 1 महीने के बाद आदर्स एंट्रेंस एग्जाम्स, और इट वाज quite very surprising for us, because as I mentioned, the students those who were not able to write their name in their vernacular language, they cracked the entrance exam, that too in that NCRT pattern, that English medium pattern. So it was very like overwhelming moment for us. It was, whenever I speak about that particular moment, I literally got goosebumps, because it is not like that much easy for the students. So we, like, later we realize, like, कि स्टूडेंट्स में वो एबिलिटी है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज 3-4 मंथ में उनको एक प्रॉपर सेटअप मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो वो लोग एंट्रांस एंट्रांस क्रैक कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और हमें थोड़ा लाइक टेक्निकली जाना चाहिए इसको लेके। फिर उसी दौरान हम लोगों ने एम बहरीन के कांटेक्ट में आए, क्योंकि हम लोगों का जितना भी एक्टिविटीज होता था, हमें कुछ फंड चाहिए होता था, क्योंकि बच्चों को हमें वहां पे बोर्डिंग और फूडिंग का अरेंजमेंट करना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल का जो जर्नी था, 2019 का जर्नी था, उस टाइम पे हम लोगों ने विलेज टू विलेज, वी मूव्ड विलेज टू विलेज टू कलेक्ट ग्रोसरीज, बिकॉज वी वर नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट। हम लोगों ने कोई सैलरी, हमारे लिए कोई सैलरी का ये नहीं था, तो हमें बस बच्चों का खाने खाने का चिंता था। तो हम लिटरली सारे विलेज जाते थे, नियर बाय विलेजेस, वी वर कलेक्टिंग राइस, दाल एंड वट एवर नीडेड। तो उसी एम वेरी, उनका उनको हमारा जो मॉडल था उसको शेयर किए। वो लोग भी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू दे गॉट टू नो अबाउट अम्बेडकर फुले पाठशाला। तो जब बहरीन के साथ हम लोगों ने कनेक्शन पे आया, तो जो थोड़ा बहुत हमारा जो प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट आउट होना शुरू हुआ। तो आप ये फोटोज देख सकते हैं, लाइक उस टाइम पे जब 2019 पे हम लोगों ने शुरुआत की थी, उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्टेशनरी था, ना बुक्स था। देयर वर वेरी फ्यू बुक्स, 2-3 बुक्स थे, उसी बुक्स में स्टूडेंट्स दे वर मैनेजिंग। बट लेटर व्हेन वी कनेक्ट कनेक्टेड विद एम बहरी, तो उन्होंने जितना भी स्टेशनरी सामान है वो हमें कंट्रीब्यूट किया बच्चों के लिए। या तो एज आई मेंशन, लाइक हमारे पास कुछ भी ऐसे सेटअप नहीं था, अच्छा वाला सेटअप नहीं था। देयर वर नो क्लोथिंग, नो लाइक टेरेस एज वेल, लाइक रूफ भी नहीं था हमारे पास, और बच्चे को सोने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट हमारे पास नहीं था। तो हम लोगों ने आप देख सकते हैं, यू कैन सी द स्लाइड, लाइक द लिविंग एरिया। तो उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट इंस्टीट्यूशन। तो जब बहरीन एम बहरीन के कनेक्शन में आए, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बच्चों का जो कंडीशन था, लिविंग कंडीशन था, उसमें थोड़ा बहुत टफ है, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं, और वी वर नॉट एबल टू हायर एनी कुक, बिकॉज हमें एक लिमिटेड अमाउंट पे बच्चों को पढ़ाना था। उसके साथ साथ उनका ग्रोसरीज, खाना, स्टेशनरी, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना था। तो हम खुद ही कुक करते थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो दुष्मंत भैया है, फिर मैं हूँ, और एक छोटा सा किचन सेटअप है जहाँ पे हम खुद कुक करके 20 बच्चों को रोज देयर लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट वी वर मेकिंग। या सो ये डाइनिंग एरिया है, और ये यहाँ का सबसे एक फेमस लाइक फूड आइटम है, नोन एज दालमा, बिकॉज वेराइटी ऑफ लाइक सब्जी बनाना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस था। तो उड़ीसा में एक दालमा का एक रेसिपी है जिसमें वी पुट सो मेनी वेजिटेबल्स इन दाल। सो
ये डाइनिंग एरिया का टाइम का आप स्लाइड देख सकते हैं, वो तो वो डाइनिंग एरिया एरिया का है। क्या प्रोग्रेस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अ, हम लोग उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, हमारा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है फिफ्थ क्लास से समझना वो थोड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए होता था, क्योंकि हम कोई टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं आते थे। तो हमको लगा कि लाइक अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रह रहे हैं तो उनका प्रोग्रेस को भी लाइक देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो सेटअप है वहाँ पे पाठशाला में, तो हम वहाँ पे बच्चों को वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट करते हैं ताकि उनका इवैल्यूएशन कर सके स्टूडेंट्स में कितना प्रोग्रेस आ रहा है। क्योंकि एज आई मेंशन लाइक जो जेएनबी का एंट्रांस एग्जाम है या फिर आदर्श का है, एकलव्य का है, वो क्रैक करना उतना इजी नहीं है, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। सो ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ड्यूरिंग इवैल्यूएशन और वीकली टेस्ट टाइम का पिक्चर है। Yeah. So you can read that quotation over there, like while like making this PPT, I thought thousands of time what should I put there, and like it is like merit is just a myth, platform matters. And why like there is a huge story as I mentioned, like students जो मतलब हमें हमेशा बोला जाता है कि you don't have merits, just because we belong to a certain caste, but it is not about the merits. Like आपको अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुरू में कि जो बच्चे कुछ लिखने के लिए एबल नहीं थे, वो विदिन 2-3 मंथ 40 out of 40 सेलेक्टेड फॉर द ओडिशा मॉडल स्कूल। सो हमारे जो यहाँ का सेटअप है कि बच्चों में जो बच्चे माइग्रेंट सॉरी चाइल्ड लेबर थे, उनके पेरेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाके काम करते थे, वो बच्चों का अगर एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर एजुकेशनल सेटअप, तो वो लाइक you can't imagine, like if you see their performance, it's like very difficult to accept, like uh, मैं काफी इंस्पिरेशन लेती हूँ स्पेशली जब बच्चे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम टेबल है, हमें स्टार्टिंग में शुरुआत में यही लगता था कि दे कांट स्टडी सच वास्ट सिलेबस, बट कुछ टाइम रहने के बाद वो खुद उनमें वो चीजें पता नहीं वो लोग कैसे उस चीज को रिसीव करते हैं। 12 hours 13 hours वो बैठ के पढ़ते हैं, दो डेस्पाइट देयर इज नो सच लाइक सेटअप। जैसे आप देख सकते हैं फोटोज में कि एक बच्चा जो है हमारे पास उतना एनफ स्टडी टेबल्स नहीं थे, तो वो एक ब्रिक्स का एक टेबल बनाया है और वहां पे बैठ के पढ़ रहा है। एक छोटा सा और साइड का जो फोटो है आप वहां पे भी देख सकते हैं कि वो अ, इतना धूप में भी बैठ के वहां पे जाके पढ़ रहा है। तो it's all about the platform, like merit is just a myth, it's all about the platform. If we are able to provide a platform to the students, they can do wonders, you know और मुझे हमेशा से फील होता है कि हमारे सोसाइटीज में भी जो सबसे बड़ा लेकनेस है कि we don't have that social institutions, like like I shouldn't counter 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 that, but if you see like what Baba Saheb said, education वो आरएसएस है। आप अगर उनका स्कूल देखें, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है उनका आइडियाज को प्रोपागेट करने में, लेकिन वी आर फेल टू लाइक एस्टेब्लिश, वी आर फेल टू फोर्स सच इंस्टीट्यूशंस इन आवर सोसाइटीज। तो ये आप बच्चों को देख सकते हैं, लाइक अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो दे कैन डू एनीथिंग। क्या ये स्लाइड्स भी आप देख सकते हैं, ये छत के ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट एनॉफ स्पेस। क्या सो हमें हमेशा से लगता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अंबेडकर फुले पाठशाला, और वी बिलीव दैट वी ऑलवेज लाइक रिमाइंड आवर हिस्ट्री, और अगेन बाबा साहेब हैज अ गोल्डन कोटेशन की वी शुड नो आवर हिस्ट्री, लाइक तो हम बीच बीच में वही चीज भी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कल्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे एंटीकास्ट लीडर्स हैं उनका जो आइडियाज है उनमें कैसे आ सके, उस चीज को कैसे वो समझ सके। तो हम वेरियस लाइक
सेलिब्रेशंस के थ्रू जितना भी हमारा ओकेजन्स होता है उसमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड करवाते हैं कि यू हैव सर्टेन हिस्ट्रीज, यू हैव सच लीडर्स, और ये तुम्हारे लिए क्या काम किए हैं, मतलब जो आज जो एजुकेशनल सेटअप देख रहे हो इसके पीछे अगर किसी का आइडियाज है तो वो एंटी कास्ट जो लीडर्स हमारे हैं उनका है। तो ये सेलिब्रेशन टाइम का कुछ फोटोज हैं। क्या क्योंकि बच्चे हैं और मैंने बोला बोला था कि उनमें उनका साइकोलॉजी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वी आर नॉट लाइक चाइल्ड एक्सपर्ट्स। तो ये जो है आसपास में जितना भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग उनको सिर्फ क्लासरूम के अंदर में पढ़ाते हैं, आसपास जितने भी चीजों से वो लोग सीख सकते हैं, क्योंकि कालाहांडी जो है वो हाईली ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरिया है, और बच्चे दे आर वेरी मच कनेक्टेड विथ नेचर। और जो भी चीजें आउटर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज करके हम उनको पढ़ा सकते हैं, वो सारे मेथड्स हम अप्लाई करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बोर ना लगे पढ़ने में। तो ये छोटा सा एक क्लिप उस टाइम का है फन एंड लर्निंग का, जब हम आउटडोर एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों से। या जिस टाइम पे हम लोगों ने शुरुआत की थी उस टाइम पे हमारे पास कुछ लैपटॉप्स नहीं थे, कुछ सेटअप हमारे पास नहीं था, और कुछ कोर्सेस हम लोगों ने परचेज किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए थ्रू ऑनलाइन। और ये उस टाइम का फोटो है जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मेरा, दुष्मंत और लोचन तीनों का हमारा स्मार्टफोन था, और उसी 3 स्मार्टफोन में बच्चे ग्रुप के, मतलब 3 स्मार्टफोन में ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस करते हुए इस पिक्चर में देख सकते हैं। So again, it's the celebration like January 1st, विक्ट्री डे सेलिब्रेशन टाइम का ये छोटा सा क्लिप है। या ये फीस्ट है, हम लोग फीस्ट भी रखते हैं में, क्योंकि अगेन इट्स ऑल अबाउट देयर मेंटल। सो वो लोग, वेरेज वो लोग घर से इतना डिस्टेंस में आके रहते हैं, तो वी शुड नॉट लाइक वो होम सिकनेस काइंड ऑफ फील उनमें नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट देयर स्टडी। तो हम मंथली आउटडोर छोटा छोटा फीस्ट भी रखते हैं मंथली फीस्ट के हिसाब से। तो ये उस टाइम का छोटा सा क्लिप है। पेरेंट्स मीटिंग, तो हमें हमेशा से लगता है कि अगर हम ये जो एजुकेशनल मूवमेंट है उसको अगर इनकलकेट करना चाहते हैं, उसको अगर एक्चुअल वे में स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उनका देयर पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लिटरेसी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट academic setup and all, but their parents should understand the importance of education. So in between our session, हम 2-3 बार उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं ताकि वो अपने बच्चों का असेसमेंट कर सके, एज वेल एज कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, और क्या डिफरेंसेस ला सकता है एजुकेशन उनके लाइफ में। वो सारे चीजों का भी हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देयर अगेन देयर पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, लाइक दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये छोटा सा क्लिप है पेरेंट्स मीटिंग टाइम का। न्यू क्लासरूम, आप लोगों ने देखा होगा जो शुरुआत का जो क्लासरूम है वो उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ डिजिटलाइज नहीं था, कुछ चीजें हमारे पास नहीं थे। बट अभी एज आई मेंशन, एम बहरीन का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है हमें इस चीज को ग्रो करने में। उसके साथ साथ हमारे सोसाइटीज के जितने भी थोड़े बहुत जो लाइक माइंडेड पीपल है, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटर्स, दो इट इज नॉट एनफ, बट समहाउ लाइक जो प्रीवियस हमारा सेटअप था उसमें थोड़ा सा हम लोग ने चेंजेस कर पाया। और अभी बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब उनके पास स्टडी रिसोर्सेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लासरूम हाईली डिजिटलाइज्ड है, वाईफाई कनेक्शन है, एलईडी टीवी है। तो शुरुआत में हमारे स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अभी उतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग ईयर्स एंड ऑल। तो ये छोटा सा हमारा न्यू क्लासरूम का फोटो है।
Okay, so initiative taken by students, as I mentioned, like uh, um, कि ये जो छोटा सा मूवमेंट है, ये जस्ट इट इज नॉट जस्ट एजुकेशनल मूवमेंट, कि ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एजुकेशनली अपलिफ्ट करने का नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा छोटा छोटा जो सोशल इश्यूज है वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि स्पेशली जो रूरल इंडिया है, और whereas Kalahandi comes under that, like it's very downtrodden, तो वहां पे कास्ट का जो फीचर है वो बहुत ज्यादा रिजीड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है वहां पे। तो बच्चे जब हमने अम्बेडकर पुलिस पाठशाला स्टार्ट किया था, इनिशियली पीपल वर डिनाइंग टू ज्वाइन बिकॉज दे नो दैट दिस स्कूल इज लाइक spearheaded by marginalized community, so the possible people were not sending their students to our पाठशाला। but later when they understood like ये सारे सेटअप का कितना जरूरी है और एजुकेशन एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो वो धीरे धीरे अपने बच्चों को छोड़ना शुरू किया। सो overall we can say that, like in nutshell we can say that, like it's a mini casteless society kind of things we created through Ambedkar Phule Pathshala, because irrespective of caste, class, gender, सारे बच्चे जो मार्जिनलाइज SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बच्चे हैं वो आते हैं, और वो दे लिव टुगेदर, दे ईट टुगेदर, दे स्लीप टुगेदर। तो ये जो चीजें हैं वो एजुकेशनल जो इनिशिएटिव है, थ्रू एजुकेशन ओनली वी कैन सी द डिफरेंसेस विद इन द सोसाइटी। और वो एक सोशल नेटवर्क भी बिल्ड होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक नेटवर्क बिल्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग्स भी उनमें आता है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनिशिएटिव टेकन बाय स्टूडेंट्स, सो ये पूरा 5 ईयर का जर्नी हमारा है, 2019 से लेके अभी तक का। तो उसमें जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स है, जो 5th क्लास के बच्चे हैं, यू विल बी सरप्राइज, लाइक जब उन्होंने पाठशाला, अंबेडकर फुले पाठशाला छोड़ा 1 साल के बाद, और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में जाके, नवोदय, कोई नवोदय में पढ़ रहा है, कोई आदर्श में पढ़ रहा है, तो वो जाके जब ज्वाइन किया और वहां से रिटर्न आया, रिटर्न आते हैं, तो वो लोग पाठशाला आते हैं और बच्चों को, जो एलुमिनाई स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट है, वो न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ पे रह के पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, वो लोचन है और मैं हूँ, और वो जो छोटी सी बच्ची बाबा साहब का फोटो होल्ड की है, वो उसके नाम गुड़िया है। तो वो यहाँ से जब जाती है अपने पेरेंट्स के साथ बात करके, वहां पे स्कूल शुरू किया उसने, फुले अंबेडकर पाठशाला के नाम पे एक छोटा सा सेटअप शुरू किया, और उसके एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उसको वो पढ़ाते हैं, ताकि वो वो एंट्रांस क्रैक कर सके। और आपके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, वो चिंकी है, अभी वो नवोदय में 8th स्टैंडर्ड में है, सॉरी। और वो मतलब वहां पे वो जब भी वैकेशन पे वो आती है नवोदय से, तो वहां के जो बच्चे हैं उनको वो लेके पढ़ाती है, ताकि वो बच्चे भी वो एंट्रांस क्रैक कर सके। सो इट्स अ ह्यूज, it is a huge achievement for us. We are very much static, like हम लोग रिजल्ट को ही देखते हैं, लेकिन जब बच्चे आके पाठशाला में पढ़ के जा रहे हैं, उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, इतने ही छोटी सी एज में वो लोग जाके अपने इलाके में ये सारे इनिशिएटिव्स लेना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। और अभी तक जो चिंकी का जो सेटअप है अपने गांव में, जब भी वो स्कूल से आती है वो पढ़ाती है, अभी तक वो कंटिन्यू है। और जो गुड़िया जो बाबा साहब का फोटो होल्ड की है, वो जो स्कूल वहां पे रन करती है, वो डेली आती है, मतलब वो उड़ीसा का जो आदर्श विद्यालय है वहां पे वो पढ़ती है, वो आके वहां पे अभी भी उनका जो स्कूल का सेटअप है वो चालू है। Yeah, so the backbone of these institutions, sorry, maybe I'm taking a lot of time, but it is very difficult for me to summarize all the journey, like what we have been 5 year within, but I will try to talk as like within this given period of time. So ये as I mentioned, ये Continue, लोचन continue. भैया है, और he is a big one of this institution, like उनका जो घर है, आप डोंट बिलीव, नेक्स्ट जो स्लैब देख देख पाएंगे, उनका जो घर है, उनका छोटा सा घर है जिसमें यू कांट एंटर, आप स्ट्रेट एंटर नहीं कर सकते, इतना छोटा सा वो सेटअप था। और उनके पेरेंट्स को गवर्नमेंट के थ्रू से एक छोटा सा रेसिडेंस मिला था, जिसके बेसिस पे जहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट किए थे रहने के लिए। लेकिन लेटर
जब उनको पता चला कि ये लोग कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को दे डिडंट थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग देयर हाउस। तो उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट अस, आप लोग उस घर के अंदर ये सेटअप शुरू कर सकते हैं। तो लोचन भैया का ही वो घर है जहाँ पे हम लोग पिछले 5 साल से अम्बेडकर फुले पाठशाला रन करते आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग पढ़ाने में भी एंगेज रहते हैं, खुद का करियर है और बच्चों को पढ़ाना, फिर कुकिंग और सारी चीजें मैनेज करना, इट वाज अ बिग डिफिकल्ट फॉर अस। बट लोचन भैया के जो पेरेंट्स थे वो दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व एज अ वॉलेंटियर, दे आर वॉलेंटियरली वर्क विद दिस मिशन। और वो लोग, लोचन भैया के जो मम्मी है, विदाउट आस्किंग अगेंस्ट एनीथिंग, लाइक जो भी है सेटअप है वो 3 टाइम ब्रेकफास्ट डिनर लंच जो भी है वो सारा चीज वो मैनेज करती है स्टूडेंट के लिए खाना बनाना, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था खाना बनाते बनाते बच्चों को पढ़ाना। तो लोचन भैया पाठ है, और जो प्रीमाइसेस को क्लीन रखने का काम है वो सारा चीज वही करती है। और ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये बाकी जो 2 वॉलेंटियर्स है, ये मैं हूँ, उसके बाद तपस्विनी जो वॉलेंटियरली हमें ज्वाइन की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर दुष्मांता, लोचन में और दुष्मांता ये जर्नी को शुरुआत किए थे, और लास्ट में जो है वो भूपेंद्र है। तो हमारे पास कुछ अभी ह्यूमन रिसोर्सेस भी है जो बच्चों को आके वॉलेंटियरली पढ़ाते हैं। तो टोटल हम 5 मेंबर हैं अभी अम्बेडकर फुले पाठशाला में एज अ एक्टिव टीचिंग स्टाफ काइंड ऑफ। हाँ, तो ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, आप लोग के स्क्रीन में अगर डिस्प्ले हो सकता है तो आप देख सकते हैं। तो कितना सिलेक्शन हुए हैं बच्चे, टोटल हमारा 50 स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पे थे, उसमें 31 सेलेक्ट में है, और जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो 18 स्टूडेंट्स है, बट उनका भी जो लोकल स्कूल्स वगैरह है उनमें सिलेक्शन लिस्ट में है। तो आप अगर रिजल्ट की बात करें तो इट्स ऑलवेज लाइक बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम में बच्चों को 4 सिलेबस पढ़ाना, आदर्श का डिफरेंट सिलेबस है, नवोदय का डिफरेंट सिलेबस है, और सैनिक स्कूल का डिफरेंट सिलेबस है, एकलव्य स्कूल का डिफरेंट सिलेबस है, सारा को 4-5 महीने में कवर अप करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इवन फॉर एडल्ट ऑल्सो। मैंने अभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम लिखा, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू कवर अ सिंगल सिलेबस, और वहां पे बच्चे इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करके 4-4 सिलेबस कवर करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट दो जितना भी टाइम उनको मिलता है उसमें जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं जो विजुअलाइज हो रहा है, ये अभी 23-20 का। सो टोटल प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये जो 5 साल में टोटल हमारा जो स्टूडेंट्स का वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे, टोटल स्टूडेंट्स में से कितना सेलेक्ट हुए हैं, यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले एज वेल, लाइक 112 स्टूडेंट सेलेक्टेड टोटल, जो स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। 20 स्टूडेंट्स जो है वो जेएनबी में अभी पढ़ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स जो है वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स जो है वो लोग एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 84 स्टूडेंट्स जो है वो लोग ओएबी ओडिशा आदर्श विद्यालय में वो लोग अभी टोटल, तो 12 स्टूडेंट्स लास्ट 5 ईयर से डिफरेंट में छोटा सा प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारा। या अभी जो करंट चैलेंजेस है, एज आई मेंशन, जो लोचन भैया का जो घर है, यू यू कांट एंटर देयर, लाइक उनका जो फैमिली है, अभी बारिश के लास्ट मानसून में उनका घर था वो कंप्लीटली वो लाइक कोलैप्स हो गया, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो वहां पे एक ही रूम था और वो रूम का ये सिचुएशन है। तो अभी जो उनके पेरेंट्स है वो पाठशाला में रहते हैं। हमारा यहाँ पे छोटा छोटा 3-4 रूम है और एक हॉल है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो जितने सारे 4-5 ईयर्स में जितने सारे प्रॉब्लम्स है, हमने थोड़ा बहुत करके सारे को टैकल किया। बट अभी के लिए अगर हम देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स अगर कुछ है तो वो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसमें लास्ट 5 ईयर से, वेरेज हम लोग लोचन भैया के घर में वो सेटअप चला रहे थे, और ये एक घर है, छोटा सा घर है। तो उनके पेरेंट्स जो है वो अभी आके यहाँ पे रहते हैं, तो थोड़ा वो
डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन वो स्पेस थोड़ा उतना नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अभी का करंट सिचुएशन में वही है कि अब जो प्रीवियस बैच हम लोग शुरू करेंगे, इसी साल का जो बैच शुरू करेंगे, तो उसमें एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन का प्लान सोच रहे हैं कि जो छत के ऊपर एक छोटा सा अगर हॉल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहां पे, तो बच्चे वहां पे फ्रीली जाके मतलब मूव कर सकते हैं। वी वुड हैव एनफ स्पेस टू टीच द स्टूडेंट्स, बिकॉज उनका स्टडी में भी कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। और एज आई मेंशन लाइक अभी के सिचुएशन में जो छोटा सा घर था लोचन भैया का, वो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं उसका कुछ नहीं बचा है, तो वो अभी पाठशाला में ही पाठशाला में ही आके रहते हैं। या सो ये हमारा आउटर लुक है अम्बेडकर फुले पाठशाला का, और ये मेरा फाइनल स्लाइड है, मे बी आई गेस। या सो finally, like I want to like like share certain things, because as I mentioned, like we are just students, we can't contribute that much in a broader way, but हमारे बीच लोचन दुष्मंत और मैं और बाकी दो वॉलेंटियर हमें लेट लेट जो ज्वाइन किए हैं, देर इज नो डाउट फॉर लाइक ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों के बीच में वो डेडिकेशन नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट लाइक आप जो रियलिटी है, जो मेटेरियलिस्टिक रियलिटी है, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। लाइक आप उस चीज को अलग करके नहीं सोच सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 40 स्टूडेंट्स डेली इन द टाइनी लाइक स्पेस। सो ये जो स्पेस है इसमें 40 स्टूडेंट्स आते हैं, 20 स्टूडेंट्स रेसिडेंट्स है, 20 अप डाउन करते हैं जो लोकल बच्चे हैं, इसी प्रीमाइसेस के अंडर पे रहते हैं। तो just it's a ask, like because like as I said, हमारे तरफ से जो पेबैक हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो हमने वो पेबैक छोटा लेवल पे सही एज ए स्टूडेंट हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और एज आई मेंशन कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप एक आइडियाज को जिंदा रख सकते हैं, वो कारवा को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसके लिए जो नीड सो मेनी थिंग्स टू एक्सिलरेट दिस इंस्टीट्यूशंस, लाइक आपको एक कैपिटल का जरूरत है, आपको ह्यूमन रिसोर्सेस का जरूरत है, तो बहुत सारी चीजें मिलके एक फोर्स क्रिएट करती है ताकि सोशल मूवमेंट आगे बढ़ सके, जो कारवा है वो आगे बढ़ सके। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी हमारे पास बहुत छोटा सा प्रीमाइजेस है, और अभी लोचन भैया की फैमिली वहां पे शिफ्ट है, तो हमें हमारे लिए नेक्स्ट बैच को रन करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और उसी के लिए ही इट्स जस्ट रिक्वेस्ट, इज जस्ट स्मॉल आस्क लाइक दोज हु आर कनेक्टेड टुडे, कि आप लोग कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अम्बेडकर फुले पाठशाला को। इट इज नॉट टू कंट्रीब्यूट अम्बेडकर फुले पाठशाला, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम कुछ भी अमाउंट जो भी हो, इट इज नॉट लाइक लाइक नेसेसिटी, लाइक देयर आर सर्टेन अमाउंट टू गिव, बट आप अगर चाहें तो पाठशाला का जो कारवा चालू है इसमें यू कैन पार्टिसिपेट देयर। और जैसे मैंने बताया कि हम सब लोगों का लाइफ में एक एक कंट्रीब्यूशन है सबके लाइफ में। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लाइफ में भी अगर हम देखें, बाबा साहब के लाइफ में, think about Siaji Gaikwad, like if he was not there, we maybe it is very difficult to think about Dr. Baba Saheb Ambedkar, because सबके लाइफ में एक खुद को एक्सेलरेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी का, एक प्लेटफॉर्म का बहुत जरूरी होता है। और जैसे हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन 2019 में शुरू किया था आउट ऑफ इमोशंस, 3-4 महीना चला लेकिन स्टॉप हो गया था। फिर फॉर्चुनेटली हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एम बहरीन के साथ हम लोग कनेक्शन में आए, और आज जितना भी आप लोग वो डिजिटल क्लासरूम का देखा, या फिर जो एक परफेक्ट जो आप प्रीमाइजेस देख रहे हैं जिसमें रूफ है, फ्लोरिंग है, अच्छा फर्निशिंग है, वो सारा जो है मतलब क्रेडिट जो है वो एम बहरीन को जाता है, बिकॉज लास्ट 4 ईयर से वो लोग कॉन्स्टेंटली हम लोगों के साथ स्टार्ट किए हैं, आई मीन स्टैंड किए हैं कॉन्स्टेंटली। कुछ भी हमारे प्रॉब्लम्स जो भी होता है, थोड़ा ग्रोसरीज को लेके या तो जितना भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, वो सारा वो लोग देखते हैं। तो हम अगर देखें तो एक कंट्रीब्यूशन का, एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत
बहुत जरूरी है किसी भी मुहिम को, किसी भी कारवां को आगे लेके जाने में, जो कि अभी एम बहरीन का आप लोग देख सकते हैं। स्पेशली लाइक बहुत सारे लोग एम बहरीन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। Silas sir maybe he heard who was the first person who like like discovered about this setup, like उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। गोपाल दावने सर हैं, पारस सर हैं, और भी जितने एम बहरीन के मेंबर्स हैं, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट है। दो वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स, बट दे ऑलवेज पुश अस, बिकॉज उन्हें भी पता है कि हम यूथ हैं, और कहीं हमें वो नेगेटिविटी आ जाए कि चलो कुछ नहीं हो सकता, हम जिस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उसमें से कोई रिसोर्स, कुछ रिसोर्सेस नहीं है, तो वो डिमोटिवेशन हमें ना आए। दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। उसके साथ साथ हमारा जो एकेडमिक्स है उसके लिए भी वो पर नहीं होता है। इट्स जस्ट अ स्मॉल आस्क, बिकॉज वी हैव वर्क टुगेदर में, we want a better for our society, और ये सारे चीजों I think Julie Naik ji has some internet issue. We हम can, sorry. शुरू करेंगे तो शायद समझ रहे हैं। तो टू फोर्ज अ कम्युनिटी, टू बिल्ड, टू या टू बिल्ड, we need environment, and thank you so one for like I think we are still not able to hear her. Julie ji, can you hear us? Can you hear me? Yeah, we can hear you. I think she probably is having a poor reception. She dropped off. Oh, okay. Okay. So she might rejoin. I think while she rejoins, I can just briefly summarize about the organization, what she's working with, little bit in English, just to give the context for people. Um, the very first thing what she mentioned was about the Baba Sahib's quote, um, which I have posted in the chat, that main are mortal, so are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering. Otherwise, both will wither and die. So that's a quotation she started off with, and there is another link which I have provided for her organization, what she's working along with right now. Um, let me see, she rejoined or not. Okay, she's not yet rejoined, but we are looking forward for her to rejoin. While she rejoins, she she basically is working in a remote part of Odisha, a small village. Um, One of the main contributors is Lochan Mangaraj, whose family is supporting the entire activity there. And AIM, which is Ambedkar International Mission, founded by not Doctor, Mr. Raju Kamble sir. And there is a unit of AIM in Bahrain, Shailesh sir is there, um, who are supporting this particular organization for a very long time. And I'm still waiting for Ms. Julie to join, Ms. Julie Naik to join. Meanwhile, if you have any questions, maybe if Shailesh or Mr. Davne sir can elaborate something more if they want to. Please check, maybe Julie is in a queue waiting to join. Is she shown in the queue waiting to join? She is saying that she is unable to connect.
No, I she don't. has not joined it. Yeah, I'm also Now looking she's for. in the waiting room. Ask Okay, her to reconnect. See I if she will, can. sure, I will. Mahendra, say Yeah, the Bahrain team is able to answer any of the questions. Seems yeah, like Satyanas has raised the question hand. yeah. So Satyanaji, Devi, you can unmute and ask question. We will see if possible, either the Bahrain team or any of us can answer your question while Ms. Uh, Julie Naikji can join. Thank you very much. I would have liked to ask her, and I would also ask you, everybody in this Zoom session, um, whether it is possible for people who are dedicated to educating children to somehow intervene in the existing government schools nearby, somehow, in a friendly way, with by talking to the headmaster, um, uh, either as a volunteer, and they could, of course, we could perhaps provide some income for them, um, to intervene in the government schools to improve the education there, and to provide after school lessons or activities, either sports activities or art and whatever way, because I think that way the expense would be less and it could be sustained longer, and their efforts could be more fruitful. So because independently, just even looking for space for the students, and then the whole thing becomes very expensive. So I'm wondering if there is a possibility of doing something with the existing government schools. Thank you. Sure, thank you. Yeah, this is Shailesh. I'm from IIM Bahrain. I can answer this question. Is it okay, Please go ahead. Mahendra? Please go ahead. Yeah, I think Julie is also joined on the call, but please go ahead. yeah. So basic idea is to provide the quality of education. Okay, there are government school. All the students who are studying in Ambedkar Phule Pathshala, they are enrolled in the government school. In government school in first, I think fifth standard, and that is the requirement of JNV or any other school, because without that, JNV will not admit. It's required the living certificate of the school. What we are Hello. trying to do here, yeah, Julia, I am answering. What we are trying to do here, Hello. trying to provide coaching for Yeah, Julie, entrance we can test. hear you. 1 minute. Shailesh is answering a question for you. Okay. Thank you for joining. So we are trying to provide the coaching for entrance test for Jawahar Navodaya Vidyalaya. I don't know how many of you are aware about Jawahar Navodaya Vidyalaya. These JNVs are in every district. There is one JNV, and it's provide quality education in English medium from I think sixth standard onwards until 12th. It's a pre-education, and many of the JNV students are in the high profile jobs, and even the government job, IS officers and doctors. So it's one of the best school run by government of India, and we want to send these kids to this high quality education. And if they don't get into JNV, then there is another school which is called Orissa Adarsh Vidyalaya. So there other student can. So it is pre-essential schooling up to 12th standard. That is our model. Thank you very much.
I hope I answer Sainath's question, because I think he misunderstood that the model. It is basically additional coaching to get into JNV Model School, Sainik School, and Eklavya School. Okay, thank you. Thank you very much, Shaileshji, for having that question answered. Thank you, Satyanaji. Anybody else has any other question? Juliji, are you on the line now? Yes, sir. Okay, I think she's on the line. So yeah, I think Aruna has raised her hand. Can you please go ahead and unmute and ask the question? Oh, okay, hi. So, what was I saying? Okay. Do you want us to sponsor any kids' education for higher education, like who's pursuing higher degree, like, if they're going for entrance exams or entrance preparation for 10th grade, 12th grade? So let me know so I can sponsor some kids study, and even my daughter can sponsor some, and my sister, she's in Mumbai. So please reach out to me, okay? And one more thing, like study furniture, if you want, just let me know. I can buy some study furnitures, so it will be convenient for them to sit and study. And you can get my contact number from Anna. Do you want to ask me anything else? No, ma'am. Thank you so much. But for the time being, this model is completely based on primary school students. Like only fifth class students are there. Yeah. So it's a small piece of information. So only fifth class students are there, and they go to JNB and other residential school, and they complete their study there up to 12th. So it's a primary based model. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you very much, Arunaji, for coming forward to to provide some support, the logistical support or the financial support, which Juliji may need. So AIM Behrin team or Shailesh ji from there can connect with Arunaji and can take it forward from there. But yeah, I can see that there is a success rate which Juliji has showed, which is like a 70 to 75% of kids has gone into the good schools for education, it's a very good response, I would say. And appreciate AIM Behren's contribution towards this particular mission. Anybody else has any other question for Julie G or the team from there? No, I would say, Julie, just keep my number in case if you come across any students, like, who are intellectual studies students, and if they need any financial help for study only. So just let me know and we can, do something. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much. Otherwise, also right now in your premises, like if you need something to help, say we can do it. Okay. Just call me. Sure. Okay, ma'am. Once again, thank you very much, Arunaji. So if no one has any question, I will just ask one small question. I could see that the kids has been motivated with different celebrations like with the Baba Sahebs and Vijay Devas Day and the 14th April Day, which is very good. I also saw Birsa Munda's photo along with the kids, which is kind of an encouragement for the kids because this is more on the tribal area. Do you have any other challenges apart from the infrastructure that we can support from remotely? Julie ji, can you Yes, answer sir. this? Yeah. Yeah. For the time being, sir, like the infrastructure is a big challenges, as well as I mentioned, like whereas we are providing residential coaching, so
for groceries and all, we need like daily basis of amount to run this institution. So, but the huge problem for this time being is that infrastructure basis things. But later, like other things are like for like stationery and for groceries, we always need such requirements and all. So apart from that infrastructure things like that groceries and maintaining cost, all this electricity bill and all, these are the like other expenses. Okay, so basically the running cost of the institution is what we are referring to. Yes, sir. Okay, good. Yeah. All right, thank you. I think we have a hand raised from Mahesh Vasnik, if he's able to unmute himself and then ask the question. Is that M Vas? I don't know, this is Mahesh Vasnik or someone else. I think he's trying to unmute but not unmute, or I don't know. So yeah, anybody else has any other question or any? Yeah, can I ask one more question, please? I just wanted to know what is J and V and OAV, and also all of these Ekalavya school and Sainik school. Right. Can you tell me about all these Yes. four? So I think Shailesh also mentioned about it earlier, Satyanathji. So these are some of the schools which are run by government in different parts of the country, and specifically these are more focused on the specified special education, meaning that they are providing a better education than government schools, the regular government schools, and that education comes free of cost to the kids. So that is what. So Jawahar Navodaya Vidyalaya or Navodaya Vidyalaya, these are the kind of esteemed government schools. You could say that. But Juliji, you can please go ahead and add something, or Shaileji, you can also add something if you want. Yeah, I will add. Yeah, I will add here. These are the very esteemed school, as you told. These are quality education with CBSE English medium. Okay, and another school is this Orissa government runs, that is Orissa Adarsh Vidyalaya, whatever they call it. And Eklavya school is basically is again government of India school. In every district, I think they have Eklavya school. This is for tribal students. Okay, but in tribal student there is a quota for general student also. So our tribal student as well as general student can go into Eklavya school. And the Sainik school is basically run by government of India to give uh, education with um, army training from class 6th onward. So what we observe that many of these NDAs and those who go to army as officer, they normally go through this route. So, but there are challenges in the getting into Sainik school because Sainik schools are limited. There are only 33 Sainik school all over India, and they have recently added 9 more Sainik school. But in Sainik school, we have to pay some fees. But in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Eklavya Vidyalaya, and Orissa Model School, it's absolutely free. So these are the government of India and government of our state government run fully free residential school up to 12th standard. I hope that was the information Satyanathji was looking forward for. But yeah, you can obviously again do some Google if you need to. Any other questions anybody has around this particular topic or around this particular activity, which is run by Julie Ji? And her team?
if nobody else has. One minute, sir. 1 minute, sir. Can you wait for some time just to make sure? Yeah. Get some time. Thank you. Once again, if anybody has another question, please come forward. But just on a brief note that this initiative, Julie ji has done a lot of work in this area. She has been to Nagloka, Nagpur to understand things. I see on the website that her last name is moved from Naik to Julia Ambedkar, which is a good thing. And her team is consist of Lochan Mangraj and Dushmant Mangraj also, who is also the core team member and is supported by his parents to contribute toward the school. So, which itself is a huge contributions, and we would like to thank them for that. Meanwhile, if anybody has any other questions, please let me know. Otherwise, I think Satyanath ji has a last question to go with. Satyanath ji, please unmute yourself if you want to ask the question. Okay, I think is not able to connect or something. So I think we are almost on time. I would like to thank Miss Julie Naik ji for running this activity, Ambedkar, Phule Ambedkar Pathshala, which is kind of a motivated from Phule, Mahatma Phule ji. She has been working in this area from last 5+ years. We really appreciate that to understand the activity, and we also appreciate the contribution from her and her team members towards the community, and we have a good amount of respect for her contributions. At the same time, we also respect uh, the sister organizations, AIM, which is Ambedkar International Mission from Bahrain, who is supporting and very actively to her and her team to get this particular Pathshala keep running. And please feel free to connect with the Julie Naik ji, or feel free to connect with the AIM Bahrain team or Shailesh ji, and you can contribute in a way whichever is possible from your end. And I once again thank you everybody for being part of the online Vihara today, and we are looking forward for our next gathering next Sunday. Thank you very much. Okay, thank you, Mahendra. Thank you. We'll meet again next time. Thank you. Thank you. Jai Bhim all. Jai Bhim.